हेलो फ्रेंड्स सनरे एकेडमी ने आपण मानक बहुत बहुत स्वागत। आज आम स्टार्ट करवा आरआरबी एनटीपीसी एंड आरआरबी ग्रुप डी रो जो एनटीपीसी पोर्सन एनटीपीसी रे जो एक्चुअली पढ़ुची ट्रेडिशनल जीके गुड़ा से प्रीवियस जो केमी पढ़ुची तार सब केमी आम आंसर गुड़ा करें से देखा हिस्ट्री पार्ट 1 आज स्टार्ट करवा। ठीक अच्छे बेस लेट करवानी पूरा 20 क्वेश्चन बढ़िया डिटेल रे बुझा स्टार्ट करवा। फर्स्ट क्वेश्चन है आपन द सिपाही म्यूटिनी इन इंडिया स्टार्टेड फ्रॉम डैश। ऑप्शन ए राजकोट, बी है मेरठ, सी है बरेली, डी है चंपारण। यहाँ आपण मैंने पूरा इजिली जानी क्वेश्चन टाइम वेस्ट करवानी मेरठ है आंसर कौन रोचे ना मेरठ द सिपाही म्यूटिनी इन इंडिया स्टार्टेड फ्रॉम मेरठ। द सिपाही म्यूटिनी वाज इन ए वायलेंट एंड वेरी ब्लडली अपराइजिंग एगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया इन 1857। ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन जी आम सिपाही म्यूटिनी ऑफ 1857 टुक प्लेस व्हेन डैश वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ऑप्शन ए लॉर्ड बेंटिंग, डी है वेलेस्ली, सी है डेलहाउसी, डी है कैनिंग। यार आंसर हम आपंकर लॉर्ड कैनिंग। कहीं लॉर्ड कैनिंग द इंडियन म्यूटिनी ऑल्सो कॉल्ड सिपाही म्यूटिनी और फास्ट वार ऑफ द इंडिपेंडेंस। तीन मन रखी था इंडियन म्यूटिनी गोटे सेकेंड कहते सिपाही म्यूटिनी कहते फास्ट वार ऑफ द इंडिपेंडेंस भी कहते ताहले वाइड स्प्रेड बट द अनसक्सेसफुल रेबेलियन अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया इन 1857-59। सिपाहीज इन द प्रेसिडेंसी ऑफ बंगाल रिवोल्ट अगेंस्ट देयर ब्रिटिश ऑफिसर्स। Charles Canning was the Governor General of India during the rebellion. Lord Dalhousie, the Governor General of India from 1848 to 1856, who divested the doctrine of lapse. which पहले डिटेल में बुझेली। Third question: Who among the following was appointed as the first viceroy of British India? Option A Lord Canning, B Wavell, सी इरविन, डी मायो। यार आंसर आपंकर से लॉर्ड कैनिंग। ठीक अच्छे केमती ना फास्ट वाइसरॉय ऑफ ब्रिटिश इंडिया इज लॉर्ड कैनिंग, लास्ट वाइसरॉय ऑफ ब्रिटिश इंडिया इज लॉर्ड माउंटबेटन, फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल इन ब्रिटिश इंडिया वाज लॉर्ड विलियम बेंटिंग, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज वारेन हेस्टिंग। यार डिटेल सब जिन किए कौन कौन अच्छा डिटेल देला तेणु मन रखी आप गोटे इजिरे आइडिया हो किए कौन कौन फास्ट होते। ठीक अच्छे कि लास्ट होते। नेक्स्ट क्वेश्चन जी आम मंगल पांडे वाज हैंग्ड इन 1857 फॉर अटैकिंग द ब्रिटिश ऑफिसर इन। ऑप्शन ए इलाहाबाद, ऑप्शन बी बनारस, ऑप्शन सी कलकत्ता, ऑप्शन डी बैरकपुर। हाँ आंसर जानते ऑप्शन बैरकपुर बहुत इजी क्वेश्चन है। मंगल पांडे वाज हैंग्ड इन 1857 फॉर अटैकिंग द ब्रिटिश ऑफिसर इन बैरकपुर। द प्राइमरी रीजन फॉर बिहाइंड द मंगल पांडे's बिहेवियर वाज बिकॉज ऑफ ए न्यू टाइप ऑफ बुलेट कैट्रिज यूज्ड इन द एनफील्ड P53 राइफल। एक्चुअली जो राफेलटा था से भितर कौन 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 समथिंग बीफ ना आपणकर जो एनफिल्ड था से कौन पिग ना आइदर केमती कौन गोटे चर्बी से ये से कार्ड से पार्टी काढ़ी कैट्रिज भर्ती करा पड़ा तेणु से कौन ना विरोध कले तेणु से गोटे से पोजिशन आसला मंगल पांडे जोटा कि से हैंग्ड हेले इन 1857। ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन आसला हु वाज द ऑर्गेनाइजर ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857 इन बिहार। बिहार किए थे? ऑप्शन ए अच्छे बहादुर शाह, बी है नाना साहेब, सी है मौलवी अहमदुल्ला, डी है कुमार सिंह। आंसर जानते ऑप्शन डी हम कुमार सिंह। ठीक अच्छे डिटेल जान देवा कुंवर सिंह led the Indian rebellion of 1857 in Bihar at the age of 18. He led a select band of the armed soldiers against the tops under the commands of the British East India Company. He was the chief organizer of the fight against the British in Bihar. He is popularly known as the Veer Kumar Singh. कुंवर सिंह अन्य नाम ही वीर कुमार सिंह। ठीक अच्छे मन रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आम जा आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857 which of the following changes was not made by the British government? ऑप्शन ए हूँ द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर इंडिया was appointed. Option B the number of Indian soldiers was increased in the British army. Option C the rights of the East India Company were handed over to the British Empire. D है the Governor General of India became the Viceroy of India. ये आंसर अब आपंकर बी कहीं मन आंसर बी टी डिटेल देखा। The number of Indian soldiers were increased in the British army. The Indian army was carefully recognized after the
1858. Some changes were made necessary by the transfer of power to the crown. The domination of the army by its European branch was carefully granted. Next question asila, who among the following was not associated with the revolt of 1857? किए ना कुंवर सिंह, बेगम हजरत महल, मंगल पांडे, भगत सिंह. तेणु ऑप्शन दो आप गेस करेंगे तीन जन ना तो आप जानी ए बी सी डीटा ना. भगत सिंह 1857 नथिले से लेटर आसिले पर आसिले. तेणु आंसर हम डी. भगत सिंह वाज नॉट एसोसिएटेड विद द रिवोल्ट ऑफ 1857. बहुत इजी क्वेश्चन. That's of NTPC पढ़ी सारी. During the 1857 uprising, who among the following took up the leadership of फैजाबाद? पूराटा जानता हूँ. कुंवर सिंह, बी एला मौलवी अहमदुल्ला, सी एला बेगम हजरत महल, डी एला खान बहादुर. ऑप्शन आंसर है मौलवी अहमदुल्ला. एक डिटेल एक्सप्लेनेशन जानिबा. अहमदुल्ला शाह born in 1787, more famously known as Maulavi of the Faizabad, was one of the leading figures of the Great Indian Revolt of 1857. In the Awadh region, Maulavi Ahmadullah Shah was known as the lighthouse of the rebellion. तेणु बेले बेले टिके बुले क्वेश्चन पचार दीजिए, who was known as the lighthouse of the rebellion. ताले आंसर कौन रहे अपना? अहमदुल्ला शाह. बुझिपाइले. नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा हमें. इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इयर्स डिड द रिवोल्ट इन द कंट्री साइड ऑफ द बॉम्बे डेक्कन अकर? बॉम्बे डेक्कन अकर केबे हिथिला? बुझिपाइले. ऑप्शन ए 1905, 1890, 1790, 1850, 1875. आंसर हो आपण 1875. The revolt in the countryside of the Bombay Deccan occurred in 1875. The purpose of the revolt was to obtain and destroy the bonds, decrees and the other document in possession of the money lenders. Chapter 10 number question देखिए. Who among the following was one of the leaders of the Santal rebellion? ऑप्शन ए सिंधु माझी, ऑप्शन डी सूर्या सेन, ऑप्शन सी बी आर आंबेडकर, ऑप्शन डी स्वामी विवेकानंद. देखो चार्टा ऑप्शन भितर सांताल रेबेलियन गोटे एमती रेबेलियन था. प्रायतः आप कौन बही टे डिटेल पाइबनी. बट सांताल रेबेलियन उपर जब देखा आम ताले स्वामी विवेकानंद को आग काटा चेष्टा करा. सी नथिले. तापर बी आर आंबेडकर सी भी नथिले. सी बहुत लास्ट को आसुनी केवल कन्स्टिट्यूशन बनवार. सूर्य सेन सिंधु माझी टी कन्फ्यूजन आसो. बट आम जदि देखा माझी कम्युनिटी सांताल रेबेलियन पाई तेणु सिंधु माझी ही आंसर. आंसर हम ए. तेणु देखा डिटेल विषय टी. सिंधु माझी वाज वन ऑफ द लीडर्स ऑफ द सांताल रेबेलियन. सिंधु मुर्मू एंड कान्हू मुर्मू वर द ब्रदर्स and the leaders of the Santal rebellion, which started in 1855 in the present-day Jharkhand and the Bengal in eastern India against both the British colonial authority and corrupt zamindari system. बुझिपारे डिटेल मुझे कहीदेली. अच्छा एबे आसिला आमर कौन गोटे एडवर्टाइजमेंट देखा. सनरे एकेडमी आईएएस एवं ओएस आपणकर फिल्म्स मेन्स एंड इंटरव्यू बैच आम पाखे अवेलेबल अच्छी. आउ ड्यूरेशन तार वन ईयर. आपड़ ऊपर देथिबा नंबर जो अच्छी से कॉल करें. एवं आउ गोटे कोर्स आम पाखे अवेलेबल अच्छी जोटा कि सनरे एकेडमी एसएससी ओएसएससी एवं ओ ट्रिपल एसएससी हाइब्रिड बैच जोटा कि ड्यूरेशन 6 मंथ. तेणु आपण ये दुटा बैच विषय टी बेसी टी अधिका ज्ञान जानापी जाऊँगी केमती कौन बैच होमती कौन पढ़ा हो. तेणु आप नंबर कॉल करेंगे कंटाक्ट करेंगे आप डिटेल जानीपारे. ठीक अच्छे. नेक्स्ट क्वेश्चन को आम जा. The Indian mutiny began from Meerut on 10th May 1857 and ended in केवे इतला बोली क्वेश्चन करछि. ऑप्शन ए ग्वालियर on 20 June 1858, कोलकाता on 13 May 1858, दिल्ली on 18 September 1859, झांसी on 15 August 1860. यार आंसर अब आपनकर ए ग्वालियर on 20 June 1858. Kamti, the Indian mutiny which began from the Meerut on 10th May 1857 ended in Gwalior on 20 June 1858. ठीक अच्छे आंसर.
Next question is Dash was the Mughal emperor during the revolt of 1857. ଏଇଟା SSC CHC ସାଲେ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟା ଆସିଥିଲା କ'ଣ ନା ବାହାଦୁର ଶାହ 1, ଶାହ ଆଲମ 2, ବାହାଦୁର ଶାହ ଆଲମ 2, ଆକବର 2। ତେଣୁ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟା ଟିକେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହୁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆନ୍ସର୍ ଦେଖିବା ଆମର ସି ବାହାଦୁର ଶାହ ଆଲମ 2। Bahadur Shah Alam II was the Mughal emperor during the revolt of 1857. The Dash Indian Mutiny of 1857 effectively ended in the city of option A Gwalior, B Amritsar, C Lucknow, D Vadodara. Answer of Gwalior. The Indian Mutiny of 1857 effectively ended in the city of Gwalior. ठीक है। Next question. Who's proclaimed of November 1, 1858 declared that thereafter the Indian would be governed by and in the name of the British monarch through a Secretary of the State. King Louis, King Philip, Queen Victoria, Queen Elizabeth. Answer of option C, Queen Victoria. The Queen Victoria's proclamation of November 1, 1858 declared that thereafter India would be governed by and in the name of the British monarchs through a Secretary of State. Who shepherded the revolt of 1857 rebellion in Bihar? Tantia Tope, Nana Sahib, Kunwar Singh, Bakht Khan. Answer of Kunwar Singh. Already discussed currently, Kunwar Singh shepherded the revolt of 1857 rebellion in जगदीशपुर जोटा कि जगदीशपुर बिहार लखनऊ रे थिले हमर बेगम हजरत महल दिल्ली रे थिले बहादुर शाह 2 एंड भक्त खान थिले बाराकपुर रे मंगल पांडे थिले एवं झांसी रे रानी लक्ष्मी बाई थिले कानपुर रे तांत्या टपे थिले एटा ठीक मन रखतांतो एटा डाइम सीट एटा क्वेश्चन पडिबो इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वाज बहादुर शाह 2 deposed by the British and exiled to the Rangoon? ऑप्शन आपन पाखे अच्छी ठीक चिंता करी आंसर कहतु ठीक अच्छे आंसर हो आपनकर सी 1857 in 1857 Bahadur Shah 2 was deposed by the British and exiled to Rangoon. Bahadur Shah 2 was the last Mughal emperor. Rangoon is the old name of the city Yangon, former capital of Myanmar. Who among the following was appointed as the first viceroy of British India? Option A Lord Canning, Lord Wavell, Lord Irwin or Lord Mayo. Answer A Lord Canning. After the 1857 war, the British Parliament directly transferred to the power of the East India Company to the Crown. Hence, the Queen Victoria became impressed of the Indian, and Lord Canning, who was the Governor General in 1857 war, became the first Viceroy of the India. The last Viceroy of India, Lord Louis Mountbatten. ठीक है आंसर जाने पहले तापर क्वेश्चन हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द फर्स्ट एंग्लो सिख वार? लॉर्ड कर्नवालसी, लॉर्ड हेडिंग, डेलहाउसी और कैनिंग। आंसर अब आपको लॉर्ड हेडिंग। Lord Hardinge was the Governor General of India during the first Anglo-Sikh War. The first Anglo-Sikh War was fought between the Sikh Empire and the East India Company between 1845 and 1846. It resulted in the partial subjection of the Sikh kingdom and the cessions of the Jammu and Kashmir as a separate princely state under the British subjunctivity. ठीक है। Next question is who was the then Governor General of the British India when Satipatha became the illegal and punishable? Lord Cornwallis, Wellesley, William Bentinck, Warren Hastings. Answer आपन सी Lord William Bentinck. এটা most important question बार-बार पढ़े। Lord William Bentinck was the Governor General of the British India when Satipatha became illegal and punishable. William Bentinck along Raja Ram Mohan Roy is given the credit of the abolishment of the Sati Pratha and declaring it as a crime. It was abolished in 1829. Next question, जो last question है, which of the following
Viceroy of India addressed the Bengal famine of 1943 by ordering the army to distribute relief supply to the starving rural Bengals. Lord Wavell, Mountbatten, Wellington or Lord Linlithgow. Answer of Lord Linlithgow. Detail देखिएगा. Lord Linlithgow was the Viceroy of India during the Bengal famine 1943. He distributed relief supply to the rural Bengalis. It is believed that the Bengalis famine of the 1943, which is estimated to have killed up to 3 million people, was not caused by dirt, but instead was a result of complete policy failure of the then British Prime Minister Winston Churchill. ये है आपणकर डिटेल एक्सप्लेनेशन. तेणु आम नेक्स्ट जो जिनस अच्छे आउट बुझा चेष्टा करवा. सन एकेडमी ISOS बैच अवेलेबल अच्छे जोटा कि ड्यूरेशन 1 year. से आपको मिल प्रिलिम्स मेन्स और इंटरव्यू बैच. आउ डिटेल जो जानवाक चाहते हैं आप ऊपर नंबर कंटाक्ट करेंगे. से भाई आउ गोटे बैच अच्छी सन एकेडमी SSC OSSC और SSC हाइब्रिड बैच जोटा कि आपंकर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दुटा विषय आपको कोचिंग दिज्व जोटा कि ड्यूरेशन है 6 months. बेसी जानवाक चाहते आप ऊपर नंबर कंटाक्ट करेंगे. तेणु आज आम गोटे क्वेश्चन ऑफ द डे रे कौन गोटे आम क्वेश्चन आम गोटे आम आपको दौचु जोटा कि आप निजे यहाँ खोजिकी निजे आप कमेंट सेक्शन आंसर दिंतु. ठीक अच्छे आम जानवा आपने जी क्वेश्चन अच्छे आपड़ी आंसर को देले आम भी से क्वेश्चन रे हार्ट सिंबल देवु जे आप जापर आप आंसर ठीक अच्छे नहीं. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाइसरॉय अपॉइंटेड द हंटर कमीशन इन 1882? लॉर्ड लिटन, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड मायो, लॉर्ड रिपन. तेणु 4टा भी तो गोटे आंसर थी. आप जो आंसर भावुं आप कमेंट सेक्शन में आम हार्ट जोड़ा देवु आप जानवे आप आंसर ठीक अच्छे बोल. तेणु ये सन एकेडमी गोटे सेसन आपमि लगे आप प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे. एमती जब आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे निश्चित आम आगू को यही कंटेंट आने चेष्टा करूँ जोटा कि आपको क्वेश्चन से डिटेल एक्सप्लेनेशन मिले. आप कौन सी बही भी दरकार पड़ोनी. आप डिटेल जी भी अच्छी जिनस आम जो क्वेश्चन डिटो से लेवल क्वेश्चन आपंकर एग्जाम आसो. तेणु थैंक्स आपण मैंने देखिले. तेणु आपण को बहुत बहुत थैंक्स. लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे. थैंक यू सो मच.